स्वागत है आप सभी का लीगल विद्या में। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग द अरेस्ट। ये जो वीडियो है इस पे हमने आर्टिकल भी लिखा है विच यू कैन फाइंड ऑन द लिंक गिवन बिलो, सो डू चेक आउट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट पॉइंट इज अरेस्ट प्रोसीजर। सेक्शन 46 सब क्लॉज 4 ऑफ द CRPC gives the procedure of an arrest of a woman, जो ये कहता है कि नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो कोई भी वुमेन को आप कभी भी आफ्टर सनसेट या फिर बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते। व्हेन वाज दिस एडेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये जो प्रोविजन है ये 2005 में ऐड हुआ था बाय द वर्च्यू ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 6। तो इस सेक्शन में ये बोला गया था, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अब इसमें दिया गया है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। नाउ व्हाट आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस? सो until and unless it is very necessary to arrest a woman because the police is of belief कि she can flee the nation or she can go into hiding, until and unless that is the circumstance, no woman shall be arrested. However, the procedure, if it is necessary to arrest a woman immediately, is कि एक woman police officer एक written report लिखेगी and she'll obtain the prior permission of a judicial magistrate of first class within whose local limit या तो वो offense commit हुआ हो या फिर arrest किया जाना हो किसी भी women को। Now that we have arrested, let's come to the second point, that is search procedure. अब सर्च दो टॉपिक्स में बांटा गया है और दो सबहेड्स में बांटा गया, और वी कैन से दैट इज सर्च ऑफ अ पर्सन एंड सर्च ऑफ अ प्लेस। फर्स्ट विल टॉक अबाउट सर्च ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 51 जो है बात करता है सर्च ऑफ अ पर्सन के बारे में, जिसमें ये बोला गया है कि वेन एवर एन अरेस्टेड पर्सन इज सर्च्ड, जो भी उससे आर्टिकल सीज हुआ है, इट बी हिज वॉलेट, हिज पैन कार्ड, हिज आधार कार्ड, हिज वॉच और हिज पासपोर्ट, वो सब एक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। एंड जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको एक रिसीप्ट दी जाएगी जिसमें ये लिखा गया होगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स उससे सीज हुए हैं, एंड दिस रिसीप्ट विल बी गिवन टू हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। हाउएवर, सेक्शन 51(2) एक काफ़ी थिन लाइन इन्वॉल्व करता है रिगार्डिंग मोरालिटी। तो इसमें यह बोला गया है कि वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू cause a female to be searched, the search shall be made by another female officer only and with regard to strict decency। ये नहीं होगा कि उसे मैन हैंडल किया जाएगा। Then comes the second point, that is search of a place। तो search of a place simply ये कहता है कि whenever there is an police officer who is executing an arrest or there is any other person जिसके पास arrest warrant हो, then he has the authority to search any premises regarding the arrest। then जो भी owner होगा of such premises, he shall allow his unrestricted entry to the premises and he shall help him conduct the search in every possible way। तो जो भी ओनर होगा पर्टिकुलर premises का, he shall not stop the police officer or any person who is executing the warrant of arrest in any way। he shall not say कि आप ये पर्टिकुलर एरिया सर्च मत कीजिए एंड वो पर्टिकुलर एरिया सर्च मत कीजिए, वो इस तरह का कोई भी बाधा नहीं लाएगा। देन इज द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 53 क्लॉज 1 जो है CRPC का, वो ये बोलता है कि इफ़ देयर इज़ एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जिसे लगता है कि एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प इन प्रोक्योरमेंट ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू द ऑफेंस, देन जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो करवाया जाएगा। एंड हु विल डू दिस? इट विल बी डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। However, section 53(2) ये बोलता है कि if the accused person brought for the medical examination is female, तो her examination must be conducted by or under the supervision of a registered female practitioner only। तो या तो एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है उसके प्रेजेंस में ये होगा, या फिर वही ये पर्टिकुलर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी इन केस द एक्यूज्ड और द अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल। तो जो क्लॉज बी है इट सेज कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा। सो एज इट इज मेंशन दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज समवन हु possesses necessary qualifications mentioned under 2H of the Indian Medical Councils Act 1956 and उसका जो नाम है it is enrolled in the state medical register।
देन सेक्शन 54(1) सीआरपीसी ये बोलता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड वुमेन कैसे होगा. एज स्टेटेड अर्लियर, इट शैल बी डन by or under the supervision of a female medical officer in the service of central or state government. लेकिन इन केस अगर कोई भी फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं हो, then the same shall be conducted by a registered female medical practitioner only. Now coming to a very important topic, that is free legal aid. Article 39A of the Constitution gives that every person who is incapable of taking legal services shall be given free legal aid by the center and the state. तो ये जो भी है ये जो भी फ्री लीगल एड है, इट इज़ अवेलेबल बोथ इन सिविल एंड criminal proceedings, and it is the responsibility of the state to provide that person with adequate legal assistance at its own expense for proper representation in the court of law. So, Justice P.N. Bhagwati ne, while explaining legal aid, he has stated that legal aid means providing an arrangement in the society which makes the machinery of administration of justice easily accessible and in reach of those who have resort to it for enforcement of right given to them by law. ये provision जो है, it extends to all section of society including women. तो अंडर द लीगल एड एक्ट जो लीगल सर्विस में दिया हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि ए वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एनीवन who is underprivileged shall be given free legal aid by the state or the center. So, if a woman is accused of an offense, she is entitled to exercise the right of free legal aid and hence ensure her proper representation in the court. एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, दैट इज हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इफ अक्यूज्ड इज नॉट एबल टू अफोर्ड लीगल सर्विसेज then he has the right to free legal aid at the cost of state. The same provision is enlisted under section 304 of CRPC. In such case, the legal service authorities shall bear the cost of legal proceedings, including the cost of printing and translation and fees of the legal counsel appointed. तो ये जो भी है, ये कहा गया था इन हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, विच इज़ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट. राइट अगेंस्ट मैन हैंडलिंग के राइट जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ मैन हैंडलिंग. सिंपली पुट, मैन हैंडलिंग मतलब किसी को हार्शली हैंडल करना. जैसे कि कभी कभी देखा जाता है पुलिस ऑफिसर किसी को ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं या फिर किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दे आर फोर्सिंग the XYZ arrested person, that is known as manhandling. So, under Section 46, Clause 1 of CRPC, it says that in case of executing arrest of an accused woman, her submission to custody on oral intimidation of an arrest shall be presumed. Moreover, if touching an accused woman is necessary to execute the process of her arrest, it shall be done by a female police officer only. Now, unless absolutely necessary or the situation seems going beyond control, no person other than a female police officer shall touch a woman to be arrested. ये सिंपली यही कहता है कि वंस अ वुमेन इज सेड कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, इट इज सेड टू एन अक्यूज्ड वुमन, देन इट विल बी अंडरस्टूड दैट she is ready to come into the custody of police. लेकिन if it is necessary to touch a woman because you think or the police think that she is about to flee, तो उस पर्टिकुलर वुमेन को सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही टच करेगी. Now, unless and until it is very much necessary or there is an absence of female police officer, which usually does not happen, no person other than a female police officer can touch the particular accused woman. लेकिन अगर absolutely necessary हो, then in such cases a male officer can also touch an accused woman. Rights to be informed regarding grounds of arrest and bail. सेक्शन 50 क्लॉज 1 सीआरपीसी का ये बोलता है कि द अरेस्टेड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट और हर अरेस्ट, एंड द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अरेस्ट शैल कम्युनिकेट द सेम टू हिम. तो ये जो राइट है टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इट इज़ ऑल्सो फंडामेंटल राइट एंड दिस राइट इज एक्सरसाइजेबल बोथ बाय मैन एंड वुमेन. सेक्शन 50 क्लॉज 2 सीआरपीसी का ये बोलता है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अरेस्ट ऑफ अ वुमन विदाउट वारंट फॉर एन ऑफेंस अदर देन नॉन बेलेबल वन,
she shall be informed for her right to be released on bail after arranging sureties on her behalf. So basically section 50 clause 2 ये बोलता है कि if a woman is arrested without warrant in case of a bailable offense, तो उस वुमेन को उसके राइट टू बेल के बारे में बताया जाएगा एंड उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा वन शी हैज अरेंज एनफ सिक्योरिटीज ऑन हर बिहाफ. राइट्स ड्यूरिंग डिटेंशन. तो सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डिटेन एन अरेस्टेड पर्सन more than 24 hours in his custody under reasonable circumstance. In case the arrested person is a woman, the arrangements of her custody must be made with strict regard to her decency. Now, according to moral norms, ये बोला जाता है कि a woman and a man cannot be kept in the same lockup or in the same room, that keeping in mind the modesty of a woman. Section 57 simply ये बोलता है कि a woman when she is arrested, she shall not be detained more than 24 hours under reasonable circumstances. लेकिन if it is necessary to detain a woman, तो क्या किया जाएगा कि उसके लिए एक सेपरेट लॉकअप तैयार किया जाएगा विद रिगार्ड टू हर डिसेंसी. तो और एक लैंडमार्क केस है, दैट इज शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इट वाज हेल्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर making an arrest to see that the arrested females are segregated from men and kept in a female lockup in the police station. In case there is no separate lockup, arrested women should be kept in a separate room. So this case simply stated कि whenever a female is arrested, उसे या तो एक अलग लॉकअप दिया जाएगा where there are only female people, या फिर if there is no separate lockup then उसे एक रूम में डिटेन किया जाएगा जहाँ पे कोई भी लड़का ना हो. So let's revise all the points that we have learned. First is the arrest procedure, which say that no woman shall be arrested before sunrise and after sunset. Then there is search procedure, जो दो categories में बांटा गया है, that is search of a person and search of a place. Search of a person ये बोलता है कि whenever a woman is needed to be searched, it shall be done by a female officer with strict regard to her decency. Then medical examination of an arrested woman. Simply put, it shall be done only by a female registered medical practitioner, or if it is an accused woman, then it shall be done in presence or by a medical practitioner who is registered under the state. Then free legal aid, article 39A and under section 304, it is provided that a woman shall be given free legal aid at the cost of state if she is unable to if she is unable to get legal services on her own. Then right against manhandling says that a woman shall be treated with dignity and decency while being arrested. Right to be informed regarding grounds of arrest and bail. Simply put, a woman who is being arrested shall be informed कि उसे क्यों arrest किया जा रहा है, and if she is arrested without a warrant in case of a bailable offense, तो उसे bail पे छोड़ दिया जाएगा once she has produced enough sureties on her behalf. And rights during detention, the most important right is that she shall be treated with dignity. That is, जब उसे arrest किया जाएगा एंड व्हेन शी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पुट अप इन अ लॉकअप, उसे लड़कों के साथ नहीं रखा जाएगा. देयर शैल बी एन सेग्रीगेशन बिटवीन अ मेल एंड फीमेल लॉकअप, एंड इन केस देयर इज़ नो फीमेल लॉकअप देन उसे एक सेपरेट रूम में रखा जाएगा. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप सबने कुछ सीखा हो. थैंक यू सो मच.